Assalamu alaikum boys. Today my lecture is very important. It is basically relating to the importance of wealth, the importance of money, the importance of capitals. No doubt likely to be a country, likely to be a society, likely to be a family who needs money, who needs amounts, who needs financial assistance in order to run affairs on our daily basis. So वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो ये है कि when you go to a market for purchasing some things, what you need amount in your purse. If you have more amounts, then what happened? Then you purchase various items, various things. It means then your purchasing power definitely increase. But if you have no money in your purse, then your dreams does not fulfill, then your desires does not fulfill, then you are unable to purchase anything from the markets. So if you want to have a ride over a horse, then you must have a money in your purse. Otherwise, it would remain a failed desire. Similarly, a country needs huge amounts of money. For example, all the developing countries like Pakistan, India and Bangladesh, they are facing multifarious problems. Their assets are less, their resources are less. This is the reason due to which they are going to soon announce as failure states, as failure countries. What should we have to do? We must focus on exports. If exports are more, then what happened? Then foreign exchange definitely would be increased. और जब ज़र मुबादला बढ़ता है, जब अमाउंट्स ज़्यादा आती है, तो उस मुल्क के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, कॉलेज बनते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं, स्कूल बनते हैं, रोड्स बनते हैं, डैम्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं. तो आपकी जो फलाह व बहबूद है, which you need from the state, for example, you need education. For example, education is a constitutional rights of the children. So government of Pakistan should provide education to the children of 5 to 16 years in such a way as defined by the law. So जब इस तरह का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बनती हैं तो आपको भी फायदा होता है. तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है वो फोकस करना होगा. एंड व्हाट शुड वी हैव टू डू? जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उनको हमें लेस करना होगा. ये जो हमारी इंपोर्ट्स हैं, हमें विद इन द कंट्री, विद इन द बॉर्डर, वी शुड मस्ट हैव टू प्रोड्यूस सच आइटम्स which Pakistan mostly imported from the other countries. For example, ये जो मशीनरी है, मोटर कार्स है, स्पेयर पार्ट्स है मोटर कार के, ये ऑयल है, पेट्रोल्स है, मेडिसिन है. All these items which Pakistan mostly imports from the other countries, these must be produced within the countries. Then what we are facing problems वो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, द थिंग दैट पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल्स, द प्राइसेस ऑफ सच आइटम्स आर लो. उनकी कीमतें कम होती हैं, और जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं उनकी कीमतें, द प्राइसेस ऑफ आवर इंपोर्ट्स आर हाई इन इंटरनेशनल मार्केट्स. जो मंगवाते हैं उनकी कीमतें बैन अवी मंडियों में बहुत ज़्यादा होती हैं. इसका मतलब यह हुआ, it means that कि our receivings are less and we pay more. हमारी वसूलियाँ कम है और हमारी अदायगियाँ ज़्यादा हैं. तो इस वजह से this is the reason, this is to be called unfavorable balance of trade for Pakistan. In order to make it favorable, हमें imports कम करनी होगी और exports पे फोकस करना होगा. और at that बेटा मैं ये कहूँगा कि हमें Pakistan is not a poor country. In short, it is only a poor managed country. It is only a mismanaged country. It is not resourceless. It is a resourceful
It is highly enriched country. Pakistan is a country which is located towards South Asia and towards its south, Arabian Sea is located. Pakistan has 4 types of weathers. Pakistan has its own fertile land. Pakistan has one of the best canal systems in the world. What should we have to do? हमें अपने कंट्रीज के अंदर मैनेज करना है. एट द एंड मैं इस पे ये कहूँगा, माई मैसेज टू ऑल इज होप, करेज एंड कॉन्फिडेंस. लेट अस मोबिलाइज ऑल आवर रिसोर्सेज इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे and tackle all the grave issues which confront us with grave determination and discipline worthy of great nation. This is where we need to go. Okay, Allah Hafiz.